Yes, we can Ravi, see. yeah, perfect. So yeah, everyone, yeah. So good afternoon, everyone, and welcome to this first session of batch two of this non-profit accounting and compliance course. Before we begin, just in addition to what Ravi just mentioned, no, I would also encourage you all to make the maximum use of this time here, and participate in today's session either by unmuting yourself whenever you need to ask question, or maybe you can just put it in the chat box as well, whenever whenever you have to type something as a question or probably respond to certain questions that would get discussed. हिंदी एंड इंग्लिश टू कंडक्ट द सेशंस. तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे विच इज ऑन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट स्पेसिफिकली. Okay, so let's begin. तो when we talk about accounting and finance function एक एनजीओ के अंदर typically इसके अंदर तीन रोल्स होते हैं which we all somewhere which the finance function comprises of. One is legal and compliance, second is accounting, and third is the finance role. Okay, so typically when we say compliance and legal, it comprises of statutory filings जैसे इनकम टैक्स हो गया, एफसीआरए, जीएसटी हो गया. स्टेट लेवल compliances हो गए, जैसे महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर के नो अंडर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है जिसके अंडर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होते हैं. सो दिस कम्स बिकम्स पार्ट ऑफ कंप्लायंस एंड लीगल. सेकेंड होता है अकाउंटिंग विच इज बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेरोल हो गया, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो गए, अपना ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए. ऑल दिस कम्स अंडर द accounting role in the non-profit accounting and finance function. और थर्ड होता है फाइनेंस रोल विच कंप्राइजेज ऑफ बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, ट्रैकिंग ऑफ बजट वर्सेस एक्चुअल्स हो गए, वेरिएंस एनालिसिस हो गया. So typically when we talk about these three roles, I would want to have a quick pulse check from you all. If you can put it in the chat box कि आप में से कौन से ये roles हैंडल कर रहे हो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. Type 1 if you're only working in compliance and legal, type 2 if you're only working in accounting, or 3 only if you're working in finance. If you're work अगर आप दो roles देख रहे हो तो just type 1+2 और 2+3 और 1+3. और कोई अगर सारे roles देख रहा है so just type all three. Okay, so we have a mix of accounting, compliance, and accounting. Okay, 2+3, 2+3, which is accounting and finance. Okay, we have people who are doing all the three as well, compliance, accounting, and finance. Perfect. So we have a mix people doing either one of the three roles or all the three roles. Perfect. Thank you for all the responses. Kranti, you have mentioned 1+4. Four option नहीं था इसमें. Maybe you wanted to type 1+3. Sure. No worries. Perfect. Perfect. So the topics that we'll be covering today, ये है एक तो let's start with understanding the need for accounting rules, and there are remaining topics which we will talk about, fundamentals, fundamental accounting assumptions, key concepts, and also the golden rule. So आज का सेशन जो है वो एक बेस है हमारे लिए फॉर द रिमेनिंग 5 सेशंस. We will touch base upon certain topics and concepts which we would have, जो हमने बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा रहेगा, जाना रहेगा व्हेन वी वर स्टडिंग मे बी. बट जब भी प्रैक्टिकल सिनारियो होता है तो वी टिपिकली रिलाई ऑन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, टू द डेटा एंट्री, टू रिकॉर्ड अकाउंट ट्रांजैक्शंस. बट उसके पीछे जो बेस है, जो फंडामेंटल्स है, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर सो दैट we can start thinking about the implications, when we as we move ahead, implications from finalization perspective, accounting as how certain transactions will get recorded in our balance sheet, income and expenditure, what will be the implications thereon. Yeah, I mean, the idea is that we touch base upon the fundamentals first so that we know the concepts and the implications
about the end result of what we do on a day-to-day basis. Okay, so let's begin with अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर अकाउंटिंग रूल्स फर्स्ट. कोई बता पाएगा कि ये अकाउंटिंग रूल्स होना क्यों जरूरी है? Why do we have all these accounting standards, certain concepts, कुछ assumptions है, set format है balance sheet P and income expenditure का? Why do we need accounting rules? Can somebody unmute themselves and speak? So typically accounting rules are laid down by accounting standards as per ICAI. कंपनी लॉ के अंडर अलग अलग रूल्स है. स्पेसिफिक चैरिटी कमिश्नर जैसे स्टेट स्पेसिफिक चैरिटी लॉज होते हैं उसमें भी कोई कोई रूल्स रहते हैं विच कंसर्न अस. So type it in the chat Hi Rohit. box. Yes, yes, Ankush. सो आई थिंक रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग रूल्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चीजें हो ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए, एज इन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए और सस्टेनेबल तरीके से चीजें रहें स्ट्रक्चर्ड वे में. Right. Absolutely. You're bang on. Yeah. Anyone else? थैंक यू. Okay, for getting idea of expenses, maintaining compliance, accountability. Perfect. So yeah, all these are like valid reasons for having accounting rules. No, one is of course to avoid any confusion. अगर imagine करो कि सारे accountants अपनी तरीके से books बनाने लग गए, you know, there won't be any standardization in the first place. This will just create confusion when we talk about recording transactions in the books. Then there is having accounting rules also ensures uniformity when it comes to preparing financial statements. Typically जो financial statements हम submit करते हैं before the authorities, before the donors, and typically public at large. So this ensures there is uniformity across. There is also a common understanding and approach to accounting practices amongst the accounting fraternity, and also it ensures comparability. हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें भी कंपैरिजन रहता है लास्ट ईयर एंड ये साल का. वो हम कर पाते हैं बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स that exist and we all follow. Okay, so after today's session you will be able to first no understand. So as we move to the next topic, we will cover fundamental accounting assumptions. कोई बता पाएगा अकाउंटिंग assumptions क्या है? What are the three accounting assumptions? Is anybody aware? कभी कुछ पढ़ा होगा बहुत टाइम पहले. Anyone can just type in the chat box or unmute yourself. Just the naming, just you can just name, what are the three fundamental accounting assumptions that exists and that we all need to be aware of. Okay, ongoing process. Okay, और कोई है who can share? Okay, so typically maybe Shalaka, you mentioned ongoing process. By that you meant going concern, I believe. So yes, going concern is one of the accounting assumptions. Then there is consistency assumption and there is accrual assumption that we all need to be aware of. We will discuss about each of these assumptions. Then there are also key concepts that we will be discussing today, key accounting concepts. And then we'll touch base upon the three golden rules, जो ना fundamental होता है for any transaction to be recorded. Okay, so let's move on to accounting assumption. So yeah, so what is going concern? Shalaka just mentioned, it's an ongoing process. Anybody would like to share what is going concern? Why is it so important for a non-profit specifically? कैन एनीवन कोई किसी से समझे सुना है ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन पहले कभी? Yes, no, you can just type it if you have heard about it but may not be able to explain. Okay, no, yes, no. Okay, there's a mix of both. No, no, no. Okay, sure, sure. So I'll just quickly will run through the meaning of
दिस अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न ये अजम्पशन है कि एक नॉन प्रॉफिट विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। ओके, जब भी हम ये अज्यूम करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वो अजम्पशन के तहत बनाते हैं, कि हमारा एनजीओ ऑपरेट करेगा इन द फोर्सिएबल फ्यूचर या बंद नहीं होगा, इट विल नॉट शट डाउन इन द इमीडिएट फ्यूचर और इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। दैट इज द बेसिक अजम्पशन बेस्ड ऑन विच हम हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, इसका पर्पस मेनली ये है कि मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग वैल्यूएशंस दैट वी डू व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली फिक्स्ड असेट के वैल्यूज हो गए या फिर ग्रेच्युटी वैल्यूएशन हो गया, जो हम एंड ऑफ द ईयर टिपिकली करते हैं। ये सब वैल्यूएशन हम कर पाते हैं बिकॉज देर इज एन अंडरलाइंग assumption दैट द नॉन प्रॉफिट विल कंटिन्यू डूइंग इट्स एक्टिविटीज इन फ्यूचर एंड विल नॉट शट डाउन और लिक्विडेट। ओके, सपोज इफ एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, अगर एक एंटिटी बंद होने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, तो इनके असेट वैल्यूज जो है विल चेंज। देन वी इफ वी आर गोइंग थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस, देन वॉट एवर वैल्यूज हमारे जो बैलेंस शीट में रहते हैं असेट्स के और लाइबिलिटीज के, विल नॉट बी रिपोर्टेड if there was no going concern assumption that we rely on. Okay, so I'll just explain this with an example as well. तो सपोज एक नॉन प्रॉफिट है जो परचेज करता है फर्नीचर से 10 लाख रुपीज का, विथ अ यूजफुल लाइफ ऑफ से 10 years. ओके, एंड एट द बिगनिंग वी नो द स्क्रैप वैल्यू इज 50,000 रुपीज। नाउ बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न assumption, ये जो फर्नीचर है वो वी डोंट शो इट एज as per the scrap value, on the date of reporting in our financial statements. Instead, we depreciate that asset year on year for the useful life of the asset. So suppose the useful life is for 10 years, तो टिपिकली हम उसको ये अजम्पशन पे जाते हैं कि द नॉन प्रॉफिट विल कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस फॉर द फॉर द फ्यूचर, एंड हेंस हम एवरी ईयर उसका कॉस्ट अलोकेट करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन। हम उसको डायरेक्टली स्क्रैप वैल्यू पे नहीं दिखाते। वो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। Okay, we'll talk about one more example which when it comes to prepaid expenses. ओके, इमेजिन अ सिचुएशन कि एक नॉन प्रॉफिट एक 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है। ओके, से ऑन 1st October फॉर रुपीज 1,20,000 रुपीज। सो एज ऑन 31st March, we have already utilized 6 months of the insurance, but remaining 6 months period, which is unexpired portion of that insurance premium, we will typically show it as prepaid expenses. राइट, तो ये हम क्यों करते हैं? सो द फंडामेंटल रीजन फॉर डूइंग दैट इज अंडर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है 60,000 रुपीज का, दिस इज शोन एज प्रीपेड असेट बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 6 more months आफ्टर 31st March। इसीलिए हम 31st March को उसका प्रीपेड एक्सपेंस एज एन असेट बुक करते हैं। दिस इज द रीजन फॉर having this concept of prepaid accrual, advances reported, and so on and so forth. Okay, is this making sense? Does anybody has any questions here? किसी को कोई पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है इस एक्सप्लेनेशन पे? ओके, ओके, सो आई जस्ट नो मूव ऑन। इफ द गोइंग, तो अगर अगर हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज समवेयर क्वेश्चनेबल, देन इट मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज। वी एज अकाउंटेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हमारे, उसमें क्लियरली मेंशन करें कि वी नो वी मे नो लॉन्गर रिमेन गोइंग कंसर्न फ्यूचर इफ एट ऑल देर इज एनी सिचुएशन विच अराइजेस, जहाँ पे नो क्लोजर ऑफ नॉन प्रॉफिट अगर होता है, या फिर नो इफ देर इज एनी अनलाइकलीहुड ऑफ non-profit continuing its operations beyond a reasonable period of time due to maybe shortage of funding, or no, the project getting closed without any new funder or new project. If we are facing such kind of situation, then the disclosure is very no, is mandatory in such case.
Yeah, and of course, with this disclosure, a lot of donors also rely. There is an assumption for the donors when they look at your balance sheet, income expenditure, financial statement कि आपका एनजीओ कंटिन्यू करेगा, इसीलिए they are supporting you for for your future projects. Is this clear? Is this accounting assumption clear to everyone? You can just type yes, no, if you want. If you have any questions, just you can just type your question or unmute and ask as well. Perfect. Perfect. Thank you. ठीक है, let's move on to the next assumption now, which is consistency assumption. Consistency assumption के ऊपर किसी ने सुना है? Can anybody tell me what is consistency and why is it critical for us as accountants to be aware of this assumption and practice when we make financial statements? इस कोई इसका बताना मतलब ये चाहिए? हुआ शायद कि हम अकाउंटेंसी में जो भी मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लंबे समय तक हम इस्तेमाल करें, ताकि करेक्ट, जब हम कम डेटा का कंपैरिजन करें तो हमें करेक्ट, यानी करेक्ट. ग्रोथ का पता चल सके। परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली यस. द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इज कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी संस्था जो फॉलो कर रही है, इट इज फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर. ऐसे नहीं कि एवरी ईयर इट चेंजेस, और एवरी 2 years द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस वेरी हाई. दैट इज नॉट हाउ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड. तो एक अजम्पशन होता है कि हम जो भी फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करें. इसका रीजन ये है कि दिस एंश्योर्स, like Israel said, it ensures comparability of financial statements year on year. और जब भी हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड्स या ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न हो जिसके तहत वो कंपैरिजन पॉसिबल हो. ओके, वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. Okay, we will talk about depreciation also in detail in the subsequent sessions. But no, typically दो तरीके के depreciation method होते हैं. एक होता है straight line method और दूसरा होता है return down value method. तो जो भी हम depreciation method adopt करते हैं, we have to follow it consistently for all the assets year on year. अगर हम change करते हैं during any of the subsequent years, then it breaks that consistency assumption somewhere. Okay, this is a typical example of consistency. So does that mean कि एक एक संस्था कभी भी उसके उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड्स चेंज नहीं कर सकती? डज इट वारंट? सो कैन एन एनपीओ एवर चेंज एनी अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड्स? व्हाट डू यू थिंक? कभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंसिस्टेंसी अजम्पशन तो बोलता है कि नहीं करना चाहिए, बट आर देयर एनी सिचुएशंस और एक्सेप्शनल केसेस वेयर अ नॉन प्रॉफिट कैन चेंज अकाउंटिंग मेथड्स? ओके, यस. कोई बता पाएगा कि कौन से सिचुएशन में चेंज हो सकता है पॉलिसीज और मेथड्स? In which situation can a non-profit change the methods or policies that they have been following year on year? Okay, maybe change with some adjustments if donor wants specific method. Okay, structural changes. Okay, okay, due to change in law. Perfect. Yeah. So typically, those exceptional cases could be either to comply with any accounting standard. अगर कोई संस्था accounting standard या governing laws follow नहीं कर रहे हैं और वो follow करने के लिए कुछ change करना पड़ रहा है, तो yes, it is allowed. और when a new method that is proposed to be changed, it gives a truer and fairer view of the financial statements, as compared to the earlier years. तो टिपिकली ये जो दो सिचुएशंस रहते हैं, उसी में अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड हम चेंज कर सकते हैं. इट इज नॉट जस्ट बिकॉज डोनर आस्क्स अस टू डू, हम हमारे मेथड चेंज करें. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. if such situation arises, then it's important कि we as an organization sensitize the donor and also create awareness with the donors, about the accounting principles that a non-profit has to follow.
Okay, is this clear? Yes, if you can just type yes, yes. Okay, perfect. Cool. So let's move on to the next assumption, which is the third assumption. Very important and critical concept that we all need to be aware of is the accrual assumption. ये बता पाएगा ये accrual क्या होता है? What is the meaning of accrual methodology और accrual assumption? हमने सबने To, सुना रहेगा, इट्स ऑलवेज, ये डिस्कशन में हमेशा आते रहता है, accrual, cash basis. What does it mean? What is accrual basis? to consider your receivables and payables, Okay, not the okay, actual cash. right, It may right, be receivable in the next year. right, right. Thanks, Ayushi. To book income and expense in the year it is incurred. Perfect. Income and expense is a match for the period. Book the expense when it's due. Perfect. Yeah, I mean, all these are the valid reasons for accrual method. So yeah, so typically income and expenses are recorded when they are earned or incurred and not when cash is actually received or paid. That is the meaning of accrual. जब भी आप उसको earn या incur करते हो तभी आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल. वेयर इन कैश, व्हेन वी टॉक अबाउट कैश, इट इज जब भी कैश आया तभी आप उसको इनकम बुक करोगे. जब भी कैश पे किया कीजिए एक्सपेंस कैश से, कैश और बैंक से, तभी आप उसको एक्सपेंस बुक करते हो ना. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड Can you please repeat that? Sorry, I am not very clear. Yeah, yeah. So we'll talk more about this, as well. But just to summarize, so accrual basis of accounting or the assumption of accrual is basically कि जिस साल में आप वो expense incur करते हो, irrespective of whether payment has happened or not, you book that expense as your expenditure in your income and expenditure. That is the basis of accrual method of accounting. Okay, we will talk about a couple of examples as well. So before the example, so purpose इसका ये होता है कि हमको जब भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट अगर समझना है फॉर द ईयर, वी फॉलो अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग. ओके, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? So, ordinarily, जब non-profits typically receive funds or incur expenses, on irregular basis. ऐसे नहीं कि consistently income आते रहेगा every month या consistently expense payout होते रहेगा. Typically, income you receive grants in a year and maybe it has to be used for in next 6 months or probably a year or so. Typically, that is the pattern in which you receive income, you incur income and expenditure. Okay, so if you're so suppose if you're only recording transaction on cash basis, तो प्रोग्राम एक्सपेंसेस जब भी आप पे करते हो आप तभी ही उसको बुक करोगे एज योर एक्सपेंडिचर. लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग इनकम वही पीरियड से पर्टेन करता है या नहीं, इररिस्पेक्टिवली आप कैश बेसिस पे उसको एक्सपेंस करोगे. बट वेर एज वेन यू आर फॉलोइंग अक्रूवल मेथड, typically the income and the corresponding expenditure to earn that income gets recorded in the same accounting period. ओके, जिससे आपको आपका एंड ऑफ द ईयर आपको सरप्लस डेफिसिट भी एक्यूरेटली कैलकुलेट करने मिलता है. एंड ऑफ कोर्स योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विल आल्सो रिफ्लेक्ट द रियल हेल्थ ऑफ योर नो ऑर्गेनाइजेशन. So we'll discuss about this topic more with couple of examples. Maybe Kusum, your questions, your confusion may get sorted with this example. So suppose a non-profit, conducts a training program in the month of March. Okay, ट्रेनिंग फी उनको पे करनी है फॉर द ट्रेनर ₹20,000. ओके, नाउ एक्सपेंस ट्रेनिंग कंडक्ट तो हो गया मार्च में, लेकिन उसका पेमेंट हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो इफ यू आर फॉलोइंग अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, you will record ₹20,000 in the month of March itself when the expenses incurred. भले ही आपने उसको पे किया हो in the month of April, you will still record it in the month of March itself because that's when you have incurred the expenditure. Okay. By doing that, for the month of March, आपका एक liability भी एक खड़ी हो जाएगी, which will be towards outstanding trainer fee. Okay, which is basically created in the month of March itself, even though the money is paid later on. And in the month of
April, it will be just recording of the payment, but not the expense, because that expense still pertain to the month of March in which you incurred that expense, towards the training fee. Okay. Uh, does this help, Kusum? I have one more example, but Yes, it does. Yes. yeah, Thank sure. Similarly, advance receive, typically a non-profit, suppose a non-profit receives 1 lakh rupees as fee from a student in the month of March, लेकिन ये प्रोजेक्ट विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये एडवांस में फी आ गई है इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ. तो अंडर अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, it is recorded as advance received from the student and not income for the month of March. Okay. It will get recorded as income only in the subsequent financial year. जब भी हम वो प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे, उसके वो कंडक्ट करने के लिए आप जब भी आप एक्सपेंसेस बुक करोगे उसके, at that point in time we will record the advance as income for the subsequent financial year. Okay. So this is the fundamental account accrual assumption concept that we all need to be aware of. Is this clear? किसी को कोई questions है इस concept पे? Okay, thank you for. Okay, Rajiv, when you say no, I am assuming there are no questions, right? Okay, Sujata. Okay, I'll just repeat once again. So just to summarize, accrual basis वो होता है जब भी आप so the assumption of accrual is that when you incur certain expenses, irrespective हम उसको आप उसको पे कर रहे हो या नहीं, you book it as expense. Same way, if there is an income which you have received in cash but it does not pertain to that financial year, अगर आपको advances receive होते हैं या आप advance payment करते हो, uh, you will book it as not as your income or expenditure for that particular year, but you will book it in the financial year in which it actually accrues. Okay, unlike cash basis जहाँ पे irrespective आपने वो income earn किया हो या expense incur किया हो, just because you have made the payment in cash, you will book it as your expense. And it's just because you have received the money in cash, you'll book it as your income. So in cash basis, there is no concept of advance, yeah, prepaid, no, or unpaid expenses. Whereas in accrual basis, all these concepts become very critical, because that's how you do the booking. We will discuss this more in detail, subsequently as well, when we understand implications on balance sheet, income and expenditure, prepaid expense हम detail में भी बात करेंगे. Maybe it will get clearer at that point in time as well. Okay. So when we talk about accrual concept, one important question that we all need to be mindful of, कि to whom is accrual accounting mandatory in the first place? So typically Section 8 companies जो होते हैं, जो non-profits which are registered under Companies Act, it is mandatory for such Section 8 companies. Whereas other non-profits which are not Section 8 companies, which are governed under whatever state specific laws no that governs them, they have two options basically, either to follow cash basis or accrual basis. But when we talk about section 8 companies, it is mandatory. Okay. Hi, sir. Yes. We are Section 8 companies, but we are means following this cash basis accounting only. In accrual, both we will use cash and accrual. In accrual, we are using in the month of March, closing the financial year. That time only we are using. Otherwise, we will follow only cash basis. Okay, got it. Yeah, so typically you will have to start following accrual throughout the year, because company law mandates accrual basis year on year. While I understand आप मार्च के मंथ में वो सब एडजस्टमेंट करते हो, सो दैट आपका 31 मार्च के दिन पे एटलीस्ट वो अक्रूवल दिखे when you prepare balance sheet and income and expenditure. But the right way of doing this is to follow it consistently month on month.
But in our all donors will ask payment details also in the month, same month expenses and same month paid details also. So if for example this month salary we can't pay in next month. So No, you that's can still pay. You can still pay in the next month, just that it will get recorded in the month in which it is accrued. some donors is not accepted, because of that we are using the cash basis accounting. Okay, okay. नहीं तो this is I mean कोई donor specific कोई requirement, if there is any specific requirement from the donor, then that has to be dealt with separately, because for donor, I think you are talking about donor utilization report. When you have to report to the donor, there is a certain way in which the donor would want to see the transactions, but that doesn't mean that you change your accounting methodology as per the governing law just to to comply with donors conditions of how they want to get the report. Okay, thank you. Yeah. Yeah, Kiran, cash basis is nothing but you prepare your books of accounts, you enter your transaction based on cash transactions. उसमें जैसे आपने पेमेंट किया, तो आप उसको एक्सपेंस बुक करोगे। पैसा आपको मिलता है इन यू रिसीव कैश और इन द बैंक, यू book it as your income. I mean, it's very straightforward. There is no concept of prepaid expenses or advances paid, advances received. It's purely based on कैश पे किया, एक्सपेंस बुक करो, कैश अंदर आया, इनकम बुक करो। Okay. Now, while we discussed about to whom this accrual concept is mandatory and not mandatory, but when we talk about income tax and FCRA law, which is again a very crucial, no, which are crucial governing laws for all the non-profits, of course, who are registered under, say, 12A, who have taken 12A certificate, or who have uh, who are uh, who have registered under FCRA law. इस केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इज दैट जब भी इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनता है, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि वी हैव टू क्लेम एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जो कंप्यूटेशन करते हैं इनकम टैक्स, वो कैश बेसिस पे होता है, वेन एवर वी सो when we make when we are doing our tax audit, in the month of say September, जब भी हम हमारा कंप्यूटेशन इनकम बनाते हैं, आईटीआर फाइल करने जाते हैं, फॉर्म 10B जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं, वो टाइम पे वी विल हैव टू प्रिपेयर द कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कैश बेसिस फॉर क्लेमिंग एप्लीकेशन ऑफ इनकम टुवर्ड्स वट एवर रूल्स आर देयर। वी विल टॉक अबाउट दोज रूल्स सब्सिक्वेंटली, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, इवन इफ यू आर following accrual method of accounting, if you are a section 8 company, but for when it comes to income tax, you will still have to prepare the computation and report in your ITR on cash basis, okay, based on spends, because income tax का रूल अभी 3-4 साल पहले चेंज हुआ है कि यू कैन क्लेम एप्लीकेशन ऑफ योर इनकम only if you have paid the expense, not just because you have booked it as your expense on accrual basis. So this is one critical point for all of us to be aware of. Similarly, FCRA लॉ के अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस FCRA के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, सो इवन इफ यू आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली, लेकिन जब भी FCRA के रिटर्न्स जब भी फाइल किए जाते हैं या FCRA के फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं, उसमें आपको अलग से रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी बनाना मैंडेटरी है। रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच शोज कि कैश कितना आया, कैश कितना गया, दैट्स द summary of that receipts and payment statement. So hence, we as accountants, it is important that we are aware of both the methodologies, even if we may be following one method as per the governing law, लेकिन अलग अलग लॉस के हिसाब से हमको देखना होगा कि हाउ टू comply with that relevant law. Okay, so Raju has a question. Does the NGO need to keep both cash and accrual method? So see, when it comes to preparation of your financial statements, you just have to follow as per the governing law. If you're section 8 companies, definitely accrual method. If you're not a section 8 company,
any one you can follow. But when it comes to preparation of computation as per income tax and FCI receipt, you will have to prepare certain statements or that computation on cash basis. You need not maintain two sets of books of accounts. You just have to maintain one, but of course there are certain reconciliations that you have to do to make those relevant statements as per the governing laws. तो आपको अलग से दो बुक्स नहीं मेंटेन करने हैं, एक ही बुक मेंटेन करना है, लेकिन आपको कोई स्टेटमेंट उसमें से बनाने होंगे बाय डूइंग सम काइंड ऑफ वर्किंग्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. दोहित, यस अंकुश. सो जैसे अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी है तो उनके केस में मतलब ऑब्वियसली दे कैन फॉलो कैश बेसिस, राइट? सो अक्रूवल करने में कुछ ऐसा कुछ फायदा है कि या नहीं है? क्योंकि नॉर्मली मुझे लग रहा है कैश बेसिस में तो ऑब्वियसली हर चीज सिंपलर ही है। राइट राइट या तो देखो सिंपलर तो नो आप बोल सकते हो टू एन एक्सटेंट, यस. बट अगेन इट इज अबाउट हाउ यू वांट टू रिपोर्ट एंड सी फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि आपको नो जैसे बड़े डोनर्स रहते हैं टिपिकली दे वुड वांट टू सी एज पर अक्रूवल बेसिस एंड नॉट एज पर कैश बेसिस, बिकॉज कैश विल नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ ओके इस साल का परफॉर्मेंस कैसे रहा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच इनकम यू वर एबल टू जनरेट, how much expense you have already incurred, what is the net surplus or deficit. कैश बेसिस में जिस साल आपको बहुत सारा पैसा आ गया, इवन इफ दैट मनी इज टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट 3 years, आपको फर्स्ट ईयर में एक हैवी सरप्लस दिखेगा, वेर एज नेक्स्ट 2 years में नो इट विल बी डेफिसिट. So all these things can be avoided if you're following accrual basis of accounting. दोहित, एक चीज जैसे डोनर के केस में ये भी होता है ना कि वो जैसे यूटिलाइजेशन में बाकी चीजें रहती हैं, तो उनको भी ये चाहिए होता है कि ये इस समय तक यूटिलाइज हो जाना चाहिए, राइट? सो उस केस में वो एक सेकेंडरी प्रॉब्लम बन जाती है कि यार वो चीज भी मैनेज करनी है। तो आई थिंक मतलब मैं ऑब्वियसली हम ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर हैं, तो मेरे को तो लगता है कि कैश बेसिस सही है, क्योंकि कंसिडरिंग डोनर्स और आपने जो बोला बिग डोनर्स, तो उनके केस में भी मेरे को ऐसा एक्रूवल वाली चीज के लिए कभी ये चीज फील नहीं हुई ना, आगे से कभी आया। सो तब मेरे को ऐसा Right, लगा कुछ right. अगर कुछ अलग से कुछ फायदा है या नहीं है फॉर ट्रस्ट एंड सोसाइटीज एक्रूवल करने का, तो वो थोड़ा सा मतलब अगर आप क्लियर कर दो कि है या नहीं Got है। it. Got it. See, law allows you to follow cash basis. So yes, you can follow cash basis. और as long as ये जो मैंने surplus deficit और financial position, financial performance, no for a year, ये evaluation की बात नहीं होती है और it is not affecting you as such, then yes, I mean you can continue doing that. Not a challenge at all. Uh, yeah, I think somebody had raised her hand. I had a Kusum, question. right? Yeah, Yes. yes, Kusum. Yeah, so I just wanted to understand. I'll give you an example and to just check if my understanding is correct. For example, we are a Section 8 company, and our in the first year we had to invest on capital equipment, medical equipment, etc. So if we use the accrual method, does that mean we will spread that cost and also the going concern, that assumption? These two assumptions, if we take into account, we'll say that this equipment is going to last us for 10 years. So we'll put it as we depreciate it or we spread out that cost over 10 years and then put that in the first year. Is that a correct understanding? Yes, yes, correct. So typically fixed assets जब भी आप खरीदते हो, fixed assets are for longer duration, right? Your usefulness is for longer duration. So typically you would capitalize, you will show it as your asset and then allocate certain cost through in the form of depreciation over the useful life. That is the correct method of accounting for fixed assets. Oh, Yeah, and yes, it will assume कि it will be a going concern कि आपका organization will go on, and also accrual method also assumption comes into picture here, where because you will be reaping the benefit of that equipment for say 5 years, hence you are allocating cost also across 5 years. Otherwise, again there will be mismatch. First year 100% expense, and then you will be generating certain income, or probably usefulness is prolonged, right, for the across the useful life of the asset. So yes, does that help? yes, yes. Thank you. Yeah. Anybody else, और किसी का कोई question है? Doit, I have one question.
हाँ करण। एज पर इनकम टैक्स लॉ यू आर मेंशनिंग इट इज ऑन कैश बेसिस ओनली। अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मार्च में कुछ हमने एक्रूवल बेस पे बुक किया सपोज एक्सपेंस, उसका पेमेंट अप्रैल में होगा, राइट? राइट। सो हमें आईटीआर में मार्च का दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, मतलब अप्रैल का कैसे दिखाएंगे उसमें? या तो तो मिसमैच नहीं हो जाएगा? करेक्ट। सो देखो, इनकम टैक्स की जब भी बात होती है तो उधर एक हम्म इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम्म एप्लीकेशन ऑफ इनकम, राइट? हम्म यू हैव टू अप्लाई योर इनकम टुवर्ड्स वट एवर दैट 85% रूल एंड ऑल, राइट? तो हम्म। आप अक्रूवल बेसिस पे भले ही उसको मार्च में दिखा होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। हेंस आप उसको उसमें नहीं दिखा सकते हो, नो, व्हेन यू रिपोर्ट इन योर आईटीआर यू कैन नॉट क्लेम एप्लीकेशन ऑफ दैट एक्सपेंस बेसिकली। सी व्हेन यू, सपोज अगर हम 10 BD फाइल करेंगे तो उसमें क्या दिखाएंगे फिर? 10 BD, you mean to say 10B, लाइक tax 10, audit report? 10 BD अगर फाइल करेंगे, जैसे उसकी रिसीट निकलती 10BE में, राइट? 10 BD हाँ वी फाइल्ड एंड द रिसीट हाँ गेट 10BE, राइट? सो टेन राइट। बी डी में मार्च तक का एक्रोल दिखाएंगे या कौन सा आप दिखाएंगे उसमें फिर? ये 10BD तो इनकम साइड है, राइट? इट इज फॉर इशूइंग फॉर्म जैसे 10B एटीजी डोनर से हमें बेनिफिट। 1 करोड़ रुपीज मिले पूरा पूरा स्पेंड करने के लिए ईयर में। लाइक हाँ। हमने उसमें 90 लाख स्पेंड कर दिए, लेकिन 10 लाख हमने अप्रैल में स्पेंड किया, सपोज नेक्स्ट ईयर पेमेंट नेक्स्ट ईयर करी उसकी, लेकिन एक्रूवल मार्च में हो गया था उसका, राइट? पूरा स्पेंड हो गया मार्च तक, बैलेंस शीट में बुक कर दिया हमने, और उसका हम्म। 10 BD हमने क्रिएट किया 1 करोड़ रुपीज का, ओके। लेकिन 10 लाख का पेमेंट हमने अप्रैल में किया। ओके। नहीं देखो, अब जब ये 10BD की बात कर रहे हो, अब हम्म। तो अब बोल रहे हो कि जो एटीजी का बेनिफिट देने के लिए आप बोल रहे हो, ये राइट? एटीजी का बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए, yes। हाँ हाँ, तो उसमें तो इररिस्पेक्टिव, उसमें तो एक्सपेंस साइड का क्वेश्चन ही नहीं आता। ओके If you receive 1 crore from a donor in this year, you can issue 10 BE for 1 crore rupees. It ends there. वो स्पेंड हुआ है चाहे नहीं हुआ है, मतलब उसका रेलिवेंस नहीं है कुछ, राइट? नहीं 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 नहीं, it has nothing to do with the accounting methodology. नो नो, अगर हम आईटीआर फाइल करेंगे उसका, राइट, तो 10 BD से मिसमैच हो जाएगा ना। 10 BD हम 1 करोड़ का इशू करेंगे, और आईटीआर हम कैश बेस पे फाइल कर रहे हैं, बिकॉज हमें 90 लाख स्पेंड किया ओनली। आईटीआर में 10 लाख, आईटीआर में 90 लाख दिखाएंगे, राइट? और 10 BD हम 1 करोड़ का फाइल करेंगे, सो देयर इज अ मिसमैच, Okay. राइट? आई थिंक हम लोग दो तीन कंसेप्ट थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, बट एनीवे करण, प्रॉब्ली आई कैन टॉक विथ यू आफ्टर द सेशन, बिकॉज ये अभी अब वी आर इन दिस ओके ओके। assumptions and concepts thing. Probably we can, yeah, talk about. Ravi, you have raised your hand. Yeah, I was just saying that I think करण आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ये जो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की वो मिक्स कर रहे हो। तो yes, ओके from a government accounting perspective, you will show 90 lakhs as income ओके। and 10 lakhs will go into your grant fund account. We will cover that later. I'm just hoping I can address this query, in that way. But from a 10 BD perspective, your income will be 90 lakhs, but your receipts will be 1 crore. Are you getting the difference? Income and receipts. Income will ओके। be 90 lakhs, that's correct. हम्म। But your receipts will be 1 crore anyway. So your 10 BD will be on receipt basis, which will be 1 crore. Anyway, Rohit said we'll address it later, but I just wanted to Yeah, make sure yeah, for yeah, it's also the confusion is a little clear. ओके ओके, या श्योर। yeah, नो yeah. तो इश्यूज। हमारा थर्ड सेशन, सेकेंड या थर्ड सेशन में हम ग्रांट अकाउंटिंग का भी डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉब्ली एट दैट टाइम आल्सो वी कैन रिविजिट दिस. Anybody else has any questions so far before we move on to the next topic? Yeah, hi Dohit. This is Yes. Tanaka. Yeah, so which one is a better option, NPO or a Section 8? And can NPO move to Section 8? देखो, अभी बेटर ऑप्शन तो अगर आप कोई अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली वी ऑलवेज एडवाइज सेक्शन 8 एज अ बेटर ऑप्शन. बट अगर आपकी संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और बहुत सालों से चल रही है, देन इट इज़ अबाउट स्टेइंग पुट. बट ऑफ कोर्स देर आर सर्टन लीगल वेज in order to convert as well, but again that's more of a legal procedure to be followed, in order to convert from a trust to a Section 8 company. Uh, yeah, I mean, but as a new organization, yes, my recommendation is always Section 8 companies because of structured way of working, right? About
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑनलाइन, you don't have to run behind the local office of charity commissioner and so on. I mean, those are the advantages and disadvantages. Does that answer you, Shalaga? Yes, but means Okay. if we want to go for that process, though it Yeah, will be, right. complicated, but if it is good for us, then we should Yeah, also yeah, apply for that. yeah, yeah. We can talk about, that in detail, process and what are the pros and cons. Yeah, Yeah, yeah. Thank you. sure, sure. Cool. So Uh, let's, yes, yes. Yes, please. so as per NGO accounting rules, we can't show depreciation in the balance sheet for next year, right? Uh, didn't get your question actually. Can you Depreciation, reframe? you told about fixed asset, right? For depreciation, Ah, we can't show expenses. Somebody APPI means Azim Premji one assigned one Mr. Vittal Rao, a senior person. He told as per NGO accounting, we can't show depreciation in the balance sheet. So that is this year financial year expenses, and we will close in this financial year only. We will maintain the fixed asset register for organization purposes. okay, okay. So I think that must be from donors' perspective, that they would have wanted expense paid on buying fixed asset to be shown as utilization of their funds. I think from that perspective, they would have advised of showing, no, the expense paid on fixed asset purchase as utilized, as funds utilized in their report. But from an accounting rules perspective, there is no such restriction for non-profits of not showing depreciation. He said as per rule only. He said not about means donors. He Yeah. said So maybe, NGO accounting rules is there only for this financial expenses and income, and we can't show receipt, income and expenses also. Only receipt and payment. okay. So maybe you can just ask him, what are the relevant provisions that he is referring to under company law or whatever law that he is referring to. Maybe you can just check with him to share those. Sure. Thank you. Yeah, yeah. Yeah, and I think though it as per income tax also, if you remember, depreciation was something that is now disallowed, right? Correct. Maybe also confusion there, mixing accounting and income tax rules, which we have seen so many times in our experience happens with so many non-profits. राइट राइट या एब्सोल्युटली सी नॉन प्रॉफिट की एक यूनिक बात होती है कि एक होता है हमारे गवर्निंग लॉज के अंडर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज वन. बट सेकंड इज इनकम टैक्स, विच इज शुड बी सीन सेपरेटली फ्रॉम हाउ वी आर डूइंग अकाउंटिंग, अंडर द कंपनी लॉ और अंडर द स्टेट स्पेसिफिक लॉ. ये दोनों अलग चीज है. वी शुड keep it separately because there are different rules governing each of the under each of the laws. So yeah, again, this also looks like a typical confusion between income tax and the normal governing law. Okay, so should we move on to the next topic, key accounting concepts? Does anybody have, okay? Does anyone have any questions? Okay, we'll move on. Cool. So yeah, so there are like 8, 9 to 10 concepts जिसकी हम अभी बात करेंगे, which are again very critical for all of us to be aware of. ये आज का सेशन थोड़ा थ्योरी टाइप लगेगा, बट दीज आर द फंडामेंटल्स फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग. इसके ये बेस बन जाता है इसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द लार्जर, आई मीन द अदर टॉपिक्स इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन. सो yeah, when we talk about key concept, the first important concept is entity concept. कोई जानता है ये entity concept क्या होता है? Maybe we can, we would have heard it somewhere, maybe read it long time back when we were studying commerce, or those who have not studied commerce, yeah, maybe, this is a new concept altogether. But can anybody share what is this entity concept? और क्यों relevant है नॉन प्रॉफिट्स के लिए? तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज है और उसके ओनर्स और वो अलग चीज है. Correct, correct. Perfect, perfect. Yeah. So this concept talks about
कि एक नॉन प्रॉफिट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स फाउंडर्स एंड ट्रस्टीज। ओके, फाउंडर्स एज इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, नॉन प्रॉफिट अलग होते हैं, दे आर टू बी सीन एज सेपरेट लीगल एंटिटीज। When it comes to non-profit, only non-profit related transactions are to be recorded in the books, not personal expenses of trustees or members or directors. Those expenses should not get recorded in a non-profit books. This is the fundamental accounting concept that we all need to be aware of. Okay, example, trustees का personal travel expense हो गया. It should not get recorded in non-profit books, even though they are holding the position of trusteeship in the non-profit. But at the same time, if the trustee is making an official visit for non-profit related work, then such expenses are paid on behalf of the non-profit. Such expenses are allowed to be considered as non-profit expenses, but not their personal travel. So that's just the key concept where legal entities are separate, individual as trustees and a non-profit separately. Okay. Then there is money measurement concept. I can just quickly, run through these concepts. Whichever concept is very critical, probably, we can talk more about that. So money measurement concept काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोलते हैं कि ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर recorded in the books of accounts. Okay, money acts as a common unit of measurement in such cases. तो कोई नॉन फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हो गया या नॉन किसी नॉन प्रॉफिट का, ऑल सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल नो अचीवमेंट्स और ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. That is called money measurement concept, which we all as accountants need to be aware of. तो अगर किसी नॉन प्रॉफिट का सोशल इम्पैक्ट है, लाइक दे आर रीचिंग आउट टू मल्टीपल बेनिफिशियरीज एंड no so on and so forth, such transaction or such impact is not supposed to be recorded in the books of accounts, because this cannot be quantified, it cannot be measured in money. Sorry, not quantified, but it cannot be measured in monetary terms. So this is again a very important concept. Then there is periodicity concept. ये एक important concept है। कोई बता पाएगा periodicity concept क्या होता है? Anyone? कभी कुछ सुना हो? और what do you understand by the term periodicity? That transactions are recorded for a year in Perfect. terms of. Perfect. Yes. So typically the life of a non-profit, total life is divided into equal time periods. Usually it's a financial year. Okay, that's how we make the books of accounts or prepare the books of accounts from the month of April to March of the next financial year. So life of the NGO is divided across equal financial years. That is what the periodicity concept calls out. Okay, because of which there is it is possible to compare year-on-year periods and prepare our financial statements. So suppose a project is running for 3 years, still हमको वो 3 years का ब्रेकडाउन करके हर एक ईयर के लिए उसको अकाउंट करना पड़ेगा, वॉट एवर इज दैट इनकम और वॉट एवर दैट एक्सपेंडिचर स्पेंड. तो इट डजेंट डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, but as per the periodicity concept, a non-profit should still break down such transactions into equal periods, which is typically a financial year. ये कुछ मार्क आ गया है रवि. आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू इरेज दिस. आई डोंट नो, आई थिंक देयर इज. Okay, I'll move on to the next slide, but again this sorry, जिससे भी गलती से हुआ हो, can you just try to erase this mark? Okay, thank you. Okay, moving on to matching concepts. Again, a very critical concept, matching concept. इसके बारे में कोई बोल पाएगा? This is somewhere related to what we discussed in the assumption somewhere. In one of the assumptions, basically. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई बोल पाएगा? The expenses are matched with the relevant income. मैचिंग कंसेप्ट मीन कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जो भी डेटाबेस हम लोग इस पर फाइनेंस और रिकॉर्ड करेंगे,
Right. So both parts should be matched. There should not deviation. There should no gap. And Okay. all the kind of like liability, asset और इनकम एक्सपेंड आइदर या फिर ट्राई बैलेंस जो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे चाहे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे Okay. all the should be matched. This is the matching concept. Right, right. Yeah, thank you. Thank you, Vijendra ji. So, yes, I mean, typically matching concept is based on that accrual concept जो हमने discuss किया, assumptions में. Expenses are recorded in the same period as the related income gets recorded in that period. Okay, so basically, uh, वो expenses हम no book करेंगे in a financial year which have helped us अर्न इनकम. सो बेसिकली देर इज इनकम, और वो इनकम अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस नो इनकर किए हैं फॉर अर्निंग दैट इनकम, you book that as your expense. So that is basically a matching concept principle. Okay, so example, this requires, इसके वजह से ये मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो नो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, पेएबल्स या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब कॉन्सेप्ट्स, this gives rise to this kind of concepts, and that is how we book that is how you record transactions in your books. तो एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है, इफ प्रोजेक्ट इनकम इज रिकॉर्ड इन मार्च and उसके related expenses, even if you have paid it subsequently, it should still get recorded in the month of March itself. I mean, that is the matching concept in simple language. Is this concept clear? Matching concept? You can just type yes, no. Yeah, cool. Yeah, sure. Thank you. Yes. Then there is this cost concept. Okay, ये cost concept क्या होता है कि assets are recorded at their original purchase cost. Okay, it does not reflect current market value. So example, a non-profit का एक कोई vehicle है, okay, जो 10 लाख रुपए में खरीदी किया रहेगा, but it will always get recorded at cost, less depreciation of course every year. Even if the market value changes, तो suppose non-profit ने 10 लाख रुपीस का vehicle खरीदी, 2 साल के बाद उसका रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है 8 लाख रुपया. ओके, बट स्टिल that vehicle, if you sell after 2 years, may you will get say 8,50,000 rupees. Still not, you will not report 8,50,000 rupees. You will still record it as cost less depreciation. So that is what the cost concept talks about. You don't, the book should not reflect the market value, but the cost at which it was purchased less depreciation. Okay, moving on to realization concept. This is again a very important concept for all of us to be aware of. What is this realization concept? कोई बता पाएगा? What is this? What does realization concept talk about? कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा? Realization concept is that कि we have provision for something like कि आपने prepaid में लिया या outstanding liability लिया, और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग या फिर प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने बुकिंग किया, बट एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड अकाउंटिंग वी शुड रियलाइज कि कहीं उसमें सेविंग तो नहीं जा रही है, कुछ डाइवर्जेंस तो हमें नहीं करना चाहिए. Okay. मे बी सर, एम आई राइट? बट आई थिंक Okay. दिस. Yeah. So so I'll just tell you, what does this concept really talk about? The concept बोलते हैं कि incomes or gains are always recorded when they are realized. So any unrealized gain is not recognized in the books of accounts. This is what this concept talks about. Okay, suppose example, एक non अर्न profit इनकम सर, जो अर्न इंटरेस्ट जो होता है वो इट्स नहीं, काइंड so ऑफ देयर interest, when we receive the bank interest, so there is yeah, showing two type of interest, like accrual and एक earned. correct. सो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हमें जो अर्न हुआ हम Accrual वही basis ले पे करना सकते हैं. पड़ेगा.
नहीं तो उस या सो सी व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट, बैंक आपको नो एवरी मंथ जो भी इंटरेस्ट अक्रूवल का एक स्टेटमेंट देगी, उसके बेसिस पे हम उसका अकाउंटिंग करके हमको उसको बुक करना पड़ेगा. सो दैट इज स्टिल इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड Yes. when it comes to bank interest. But this concept what it talks about is, suppose आपके नॉन प्रॉफिट ने एक लैंड खरीदा रहेगा. ओके. और वो लैंड का वैल्यू आपका 5 साल का बढ़ गया. Now what is this increased value? That is unrealized gains for the non-profit, but you will still not record that unrealized gain in your books of accounts. आप जब ये वो लैंड सेल करते हो, only then you will book it as your surplus or profit. That is when you realize the gain, and that's when you will book it in your books of accounts. Just because market value बढ़ गया है, that doesn't mean that you uh, book the unrealized gains. That is what this concept talks about. Does that help in clearing this concept? Okay. Yes, thanks for responding. Yes. Okay, let's move on to dual aspect concept. Again, a very critical concept for all of us to be aware of. Ayushi, you have written a question. Yes, same goes for mutual funds also. Uh, yes. Even for mutual funds, if you see कि जो अपने अगर नॉन प्रॉफिट ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, तो एक एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो एनएवी अगर 1 साल या 2 साल के बाद बढ़ता है, आप जाके वो जो बढ़ी हुई अमाउंट है वो आप बुक नहीं करते हो अपने बुक्स में. You still record keep it as your as cost, because that increased NAV is your unrealized gain. Only when you sell those mutual funds, only that time that income will become realized. So yes, right, you Got it. see. But Yeah. what if it is an unrealized loss? Yeah. So no, Same so concept. correct. So no, based on conservatism concept, which again we will Hmm. talk about, yes, you will have to book it. We'll come to Oh, that. We'll come to that. Yeah. okay. Yeah. So let's talk about dual aspect concept. This is again a very important concept, and typically we all are somewhere aware of this. So every transaction, जो भी एक transaction एक NGO enter करता है, every transaction has two equal and opposite effects. जस्ट लाइक वो न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही दिस इज अ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि हर एक ट्रांजैक्शन में टू इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू अमाउंट. तो डेबिट और क्रेडिट बेसिकली दोज आर टू opposite effects that we have to give. This concept forms the basis of double entry bookkeeping. अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा रहेगा, राइट? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस funds. When we say funds, it is capital introduced initially and then corpus funds. So this is the formula that we use for, in case in the for profit world we say assets equal to liabilities plus equity, but in non profit sector we replace that equity with funds, which comprise of corpus donations plus capital introduced initially by the founders typically. ओके. सो या वन एग्जांपल, जैसे अगर एक नॉन प्रॉफिट को कॉर्पस डोनेशन मिलता है, सो हाउ विल यू नो बुक दैट कॉर्पस डोनेशन, राइट? तो एक तो अब पैसा आया तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे बिकॉज मनी हैज कम इन, तो असेट बढ़ गया. सब्सिक्वेंटली आपको कॉर्पस फंड दिखाना पड़ेगा. कॉर्पस फंड भी इंक्रीज होगा बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इट एज कॉर्पस, राइट? सो लायबिलिटी. तो at one side asset increases, and on the other side the liability side, no under the liability side corpus fund will increase by the same amount. That is what the dual aspect concept talks about. Okay. Moving on to the conservatism concept. So this is again a very important concept, and Ayushi just mentioned about this example that she gave कि losses होता है तो क्या होता है. So typically accounting में what we follow is that we always provide for all the expected losses or expenses, uh, but we do not recognize uncertain income or gains. So जो realization concept जो देखा उसमें सिर्फ रियलाइज्ड इनकम ही हम बुक करेंगे
अनरियलाइज इनकम बुक नहीं करेंगे, बट लेकिन अगर एक्सपेंडिचर साइड में अगर कोई लॉसेस हो रहा है, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट वी ऑलवेज हैव टू बुक सच लॉसेस। ओके, ओके, सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एग्जांपल, जैसे यू नो ये वॉलेंटरी डोनेशन, अगर किसी ने, किसी डोनर ने कमिट किया है कुछ पैसा, बट टिल द टाइम वी रिसीव दैट मनी वी विल नॉट book it as our income, just because donor has committed, because it is still voluntary, right? So based on this conservatism concept, we will not book any income just because somebody has just committed, which is a voluntary commitment. Only when we receive we will book it as income. But whereas अगर कोई किसी से पैसा लेना बाकी हो, when it comes to vendors or service, basically किसी से पैसा आना बाकी हो, when we are, if an NGO is giving any services or अमाउंट इनवॉइस रेज हो गया ऑलरेडी, लेकिन पैसा आया नहीं है सामने वाले कस्टमर से या क्लाइंट से और द बेनिफिशियरी से, तो अगर ये अनसर्टेनिटी आती है देन वी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, नाउ व्हाई वी क्रिएट प्रोविजन is based on this conservatism concept. ओके, सेम सेम एग्जांपल आयुषी जो आपने बोला था ना, म्यूचुअल फंड के एग्जांपल में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है देन यस टिपिकली वी विल हैव टू राइट डाउन द वैल्यू टू दैट एक्सटेंट। यस, so anybody has questions? ओके, इसके बाद आता है दिस इज द सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी टचिंग बेस अपॉन, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे हमारे लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल, इसके इम्प्लीकेशंस भी हमने देखे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग, ओनली सिग्निफिकेंट, यस। I think there's a question in the chat box. Alicia is saying conservatism is for current assets, not fixed assets. See, conservatism is basically for income and expenditure. Conservatism, so when we talk about conservatism concept, it we have to look at it from कि किस वजह से लॉस होगा क्या या एक्सपेंस इनकर होगा क्या, और इनकम जनरेट होगा क्या। सो व्हेन यू से करंट असेट्स एंड नॉट फिक्स असेट, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द राइट क्वेश्चन, बट okay, so when we talk about fixed asset, even there conservatism concept is applicable because we are depreciating the value of fixed asset every year, right? Why do we do that? Because of the conservatism concept कि एक फिक्स्ड एसेट जो हमने स्टार्टिंग में खरीदा था 10 लाख रुपए में, उसकी 5 साल के बाद वैल्यू उसकी कम होने वाली है। सो वी आर बेसिकली बुकिंग दैट लॉस। बट अगर वो फिक्स्ड एसेट 5 साल के बाद वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, वी विल नॉट we will not book it as income for that unrealized gain. That is what conservatism talks about. Okay, so moving on to materiality concept. तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनली सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिपोर्टेड इन डिटेल इन आवर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनसिग्निफिकेंट आइटम्स में नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन डिटेल। ओके, अभी ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट क्या है, सी देयर इज नाउ दिस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज very subjective. It all depends on no the transaction amount, no the line items amount, non-profit size, nature of information available, not available, and so on. I mean, there are a lot of factors that are involved when it comes to materiality concept. But ये ऑडिट के टाइम पे हमने काफ़ी देखा है कि ऑडिटर की टीम कुछ छोटे छोटे अकाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स का कुछ क्वेरी लेके आते हैं, and then we are also struggling to give answers if at all we don't have the relevant information about it. But here we have to somewhere we all need to understand कि कोई अगर insignificant amount रहेगा, and even if we are not able to give accurate or entire details, it is okay, we can still go ahead and finalize our books. ओके, सपोज एग्जाम्पल फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑफ से 1 crore रुपीज, जिसका 1 crore का टोटल ग्रांट साइज है एग्जाम्पल,
उसके लिए 100 रुपया या 200 रुपया का कुछ लाइक रीइंबर्समेंट का सपोर्टिंग नहीं है, एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू। या उसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एक्सपेंस किसमें कहाँ पे कभी किया था। Such expenses can be still clubbed under say miscellaneous expenditure and we can move on. But whereas अगर वही 5 लाख रुपए का एक्सपेंस है और इसका हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, then no, that will not be acceptable because 5 lakh is significant, it is material amount. But immaterial amounts we can still go ahead and club it under certain line items and do the and proceed when it comes to finalization. So that is what this concept talks about. Dohit, I have a question. So Yes. as you're saying, if the expense is 100 rupees, we can move on. It's a larger amount. We have to, see the record. But for how much we should ignore it? Like suppose 1,000, 5,000, 10,000. So नहीं. is there any limit we should No. ignore the support or No, so unfortunately there is no limit as such. This is purely based on materiality. Again, हर एक नॉन प्रॉफिट का अलग materiality level रहता है. तो ये आपको जजमेंट करना पड़ेगा. See, it is not just about not having supportings. It is also about when you prepare income and expenditure. उसमें भी कितने लाइन आइटम्स तक आप डिटेल में दे सकते हो. आप हर एक इनकम एक्सपेंडिचर में आप देखोगे एक मिसलेनियस लाइन आइटम रहती है जिसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें रहती है वी क्लब इट एंड रिपोर्ट इट. Now, what should ideally go there is again a question of judgment. If it is significant amount, then no, you cannot club it with miscellaneous. You still have to show it separately. You have to give information कि this is towards say travel or or some event expenses or meeting expenses. लेकिन अगर one off है छोटा amount है, you can still club it. So again, there is no standard limit as such. This is purely based on one's own judgment, and also you have to also keep the auditor's perspective in mind ki what is material for the auditor as well, because they are the ones who will be certifying that how whatever accounting and books that you are maintain are okay or not, right? So again, that materiality concept, you have to also take buy-in from your auditors when it comes to defining the materiality level. Yes, और कोई क्वेश्चन है किसी के? Okay, perfect. So those were the 9 key concepts under accounting. There is also this one concept of capital and revenue. ये भी बहुत सारे questions इसके ऊपर भी आते हैं कि what is capital expenditure, what is revenue expenditure, or rather what is capital income and revenue income as well. कोई बता पाएगा like whatever you guys understand capital और revenue क्या होता है? Can somebody unmute? हो सकता है कि आपने ये कभी कुछ सुना होगा या शायद आपने रिपोर्ट भी किया होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. What Capital is expenditure are those expenditure which been used for more than 1 year, and okay? revenue expenditure are those which we can use within the year. Right. Okay. Sure. Thanks, Rajesh. So yeah, so typically, how it works is that see, capital expenditure is basically money spent for long term for building long term assets. In simple language. Okay, that will be useful for more than 1 year. So like Rajiv was trying to call out. So typically, fixed assets होते हैं जिसका useful life 1 साल के ऊपर रहता है. That is where that is those are the typical examples of capital expenditure. Yeah, Farin has also written is investing in long-term fixed asset. Yes. So these assets typically help the non-profit run its activities over multiple years. Examples are अगर एक non-profit ने land खरीद लिया हो for school या एक construct किया हो कोई community center, तो जो भी खर्चे incur होते हैं for doing all building of all these assets are capital expenditure. Purchase of computers, vehicles, or major renovation. If major innovation is being done in the premises owned by a non-profit, even such expenditure can be capitalized क्योंकि इसका यूजफुलनेस आपको 1 साल के ऊपर होने वाला है. That's how you define capital expenditure. Whereas revenue expenditure is money spent on day-to-day activities of non-profit. Okay, it is consumed within the same accounting same year basically typically. तो जैसे सैलरी एक्सपेंसेस हो गए ना, हम मंथ ऑन मंथ पे करते हैं फॉर इट इज कंज्यूम्ड विद इन द ईयर. रेंट हो गया, ट्रैवल
ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, वर्कशॉप्स के लिए कोई एक्सपेंस किया, बाद में प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट वी इनकर. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको एक समझना पड़ेगा. सो टिपिकली व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, the right accounting treatment as a thumb rule is that this is shown as asset in your balance sheet. Okay, उसका कॉस्ट आपको डेप्रिशिएट करना होता है. वॉट एवर असेट्स, फिक्स्ड असेट यू हैव, you typically depreciate over its useful life. With one exception is land. Land never gets depreciated. Okay, that's a thumb rule. Okay, and जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, it does not affect your surplus or deficit for that financial year. Whereas when it comes to revenue expenditure, uh, such expenditure is recorded in your income and expenditure statement and directly affects your surplus and deficit for that financial year. Okay, this is with respect to capital expenditure. Similarly, capital income और capital revenue क्या होता है? तो capital income is typically income received for specific long-term purpose or for creating assets and not for routine expenses. Okay, such income is not to meet day-to-day expenses. जैसे हो गया corpus donation. Okay, हम corpus donation के ऊपर भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे in the subsequent session. So corporate donation अभी के लिए for now, just to understand the concept, when the donor is giving something in writing that this donation is towards corpus, we call it as corpus donation. Okay, such donation which is specifically given towards corpus is capital in nature. It is not to be used for day-to-day expenses. ओके, फिर कोई डोनेशन होता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई डोनेशन देता है, तो टिपिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो टेक्स टाइम, राइट? द बेनिफिट्स ऑल्सो रीप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So such income, when a non-profit gets, these are capital incomes. सेम वे व्हीकल खरीदने के लिए या इनके इक्विपमेंट खरीदने के लिए कोई डोनेशन आता है, ग्रांट रिसीव होता है, ऑल दीज आर कैपिटल इनकम्स. सेम वे आप जब भी सेल करते हो ऐसा कोई फिक्स्ड असेट, तो वॉट एवर इनकम यू गेट, इवन दैट इज कैपिटल इनकम. Okay, whereas revenue income is the income received for regular activities of non-profit. जैसे डे टू डे खर्चा करने के लिए जो भी आपको इनकम जनरेट करते हो, जैसे जनरल डोनेशंस हो गए या इंटरेस्ट आपने अर्न किया फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स पे, ऑल दीज आर रेवेन्यू इनकम. ट्रेनिंग से कुछ फी आई या कोई ग्रांट दिया, जो टू द ग्रांट इज यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ नॉन प्रॉफिट. दीज आर ऑल रेवेन्यू इनकम. Now, again, why we need to know the differentiation is again from accounting treatment perspective. So the thumb rule here is capital income affects the balance sheet, whereas revenue income affects the income and expenditure statement. That is the thumb rule. कभी आप जब भी आपको कैपिटल इनकम आता है, जैसे कॉर्पस आ गया या स्पेसिफिक ग्रांट्स आ गए या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई ग्रांट्स आ गए, these will get recorded in your balance sheet first as a liability. Whereas आपको जो जनरल डोनेशंस आते हैं, इंटरेस्ट अर्न होता है, फी आती है, ये सब आपको डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, सर अगेन. मेरा एक क्वेश्चन था। यस सचिन. जैसे आपने यहाँ पे कैपिटल इनकम में लिखा है स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म पर्पस, जैसे कोई डोनर है वो हमें 2 मंथ के लिए फंड देता है, तो उसे हम कैपिटल इनकम मानेंगे या रेवेन्यू इनकम? हाँ, सो 2 महीने के लिए अगर वो बोलते हैं कि ये फंड अगर यूज करना है आपको टुवर्ड्स से सैलरीज, रेंट, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, देन टिपिकली दिस इज रेवेन्यू इनकम. हम्म. Okay, so if you see here, project grants for running programs, typically these are considered as revenue income. ओके. Yeah. Anybody else has any questions? किसी को कोई questions है इसके ऊपर? Dohit, Yes, Ankush. so if we get some donation from a corporate and for the renovation of maybe say a single Anganwadi, and in Right. that case क्या हम और जो अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है सच, राइट? एंड तो उस केस में क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन प्रॉपर एक बिल्डिंग का नहीं कर रहे हैं बट द रिवैम्पिंग एंड रिनोवेशन कर रहे हैं, सो उस केस में क्या चीज़ रहेगी? या तो अगर आपने वो आंगनवाड़ी आपके खुद की है, प्रेमाइसिस आपका खुद का है, और जो रिनोवेशन अमाउंट इन्वॉल्व है जिसका
बेनिफिट्स आपको 1 साल के ऊपर होने वाला है, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट? सो टिपिकली सच इनकम इज कंसिडर्ड एज कैपिटल इनकम। ओके, गॉट इट। या एंड अगर वो जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें हम कर रहे हैं अगर ऐसा, मे बी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी अगर बोले। हेलो। 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 यस अंकुश, एम आई सॉरी आई ऑडिबल लॉस्ट दो? यू। यस हाँ, यस, सो आई सॉरी। वाज सेइंग, या आई वाज सेइंग कि अगर आपने बताया कि वो जैसे वो जो आंगनवाड़ी है वो गवर्नमेंट की है, राइट? सो ओके। ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उस केस में। हाँ तो देखो, अभी अगर गांव तो आपकी प्रेमाइसेस नहीं है वो, टिपिकली, हम्म। तो अपने तो सी देन टिपिकली देन when it comes to accounting, you may consider it as expensing, the for the very reason कि even so what if if you're just taking it on rent, the premises, what if the rent gets closed and you are asked to leave? So you will not be able to take away that expenses which has been incurred on the premises, right? Typically, unless you have a long term lease. तो इसमें थोड़ा जजमेंट यूज करना पड़ता है कि इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द नेचर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द नॉन प्रॉफिट एंड द ओनर ऑफ द लैंड और द स्ट्रक्चर, कि लॉन्ग टर्म या। लीज है, एंड इफ यू आर गोइंग टू लाइक जैसे 99 ईयर्स लीज होता है, 10 ईयर्स लीज होता है, लॉन्ग टर्म लीज है, तो यस, स्टिल देन यू कैन स्टिल कैपिटलाइज बिकॉज यू विल बी रीपिंग द बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। बट अगर अपने लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट में एंटर किया है जस्ट फॉर 1 or 2 years, or and if you are incurring a lot of expenditure, then typically such expenditure should not be capitalized, because you don't know, right? You will, if 2 साल के बाद आपको अगर निकलना पड़े वो प्रेमाइसेस से, then you cannot हाँ। reap the benefits for a long term period. So again, this is a हम्म। very subjective decision that needs to be taken, but whatever stand you take, it should be appropriately disclosed in your notes to accounts when you prepare the income and expenditure हम्म। and balance So, sheet. I ask this question because हमारे केस में sometimes because like we consider the amount, right? Because sometimes amount बहुत ज्यादा सिंगल आंगनवाड़ी के लिए, तो हमें कभी कभी लगता है कि यार इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाएं बिकॉज अमाउंट कंसिडरेबली बड़ी है, बिकॉज चीजें बहुत होनी है। एंड हम्म। अगर नहीं होता है और बहुत कम होता है, मे बी जस्ट पेंटिंग एंड अदर स्टफ, हम्म। मिसलेनियस स्टफ अगर कुछ होता है, तो उस केस में हम इसको फिर वैसे कैपिटल में नहीं दिखाते हैं। तो मतलब वो हम कर रहे, तो आई थॉट कि यार सो तभी मैं Got भी थोड़ा it. सा कंफ्यूजन में था कि यार वो क्या हम सही कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग द अमाउंट। Got it. Yeah, तो एक होता है considering the amount, of course, but just because amount is more, that doesn't mean that you have to capitalize it. या। Even if the amount is more, लेकिन अग्रीमेंट ही 11 महीने का है या 2 साल का है, प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म पीरियड का है, और लीव एंड लाइसेंस है, ऐसे भी नहीं कि फाइनल लीज है, तो हम्म। टिपिकली देन यू कैन स्टिल एक्सपेंस इट आउट एज रेवेन्यू हम्म। एक्सपेंडिचर। हम्म। थैंक्स रोहित। या I will या। also just add very quickly. I think one of the factors, like Dovit was highlighting, is also to consider कि क्या वो सच में आपकी प्रॉपर्टी है। लाइक यू सेड, आप गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी में काम कर रहे हो, तो भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट लंबे पीरियड का है, ना, टुमारो इफ यू आर आस्क्ड टू लीव, इफ यू कैन टेक दैट एसेट विथ यू, इट रियली बिलोंग्स टू यू, then go ahead and capitalize it. But if it doesn't belong to you, there is no ओके। way you can show this as your asset. मतलब, I don't know if you're getting it. It is as good as you have donated to that premises where you are working. हम्म। गॉट इट रवि, या। थैंक यू। यस। एनीबडी हैज और किसी के क्वेश्चंस है? ओके, sure. So we will move on to the last topic for today, which is again a very critical topic when it comes to accounting, the golden rules of accounting, जो हमने काफी पढ़े हैं when we started learning accounts, which becomes the backbone somewhere. It's a like fundamental, right? It's like learning the alphabets of accounting. So we will also cover this topic in the in the next few minutes. So, before we understand the golden rules, or maybe before we refresh the golden rules that some of us are already aware of, some of us may not be aware of, but yeah, we'll try to
discuss this in detail. But before we talk about golden rules, important होता है कि we all need to understand the three types of accounts that exist. When it comes to accounting, कोई बता पाएगा what are the three types of accounts that exists? हर एक account. रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल ना? Perfect. Yeah, correct. So the three types of accounts are real, personal and nominal. हम हर एक अकाउंट की थोड़ी ब्रीफली बात करेंगे, especially for those who have not studied accounting, but since because they are working in the sector, working or somewhere related, associated with the accounts function in the non-profits, we all need to be aware of these fundamentals as well. So what is personal account? Okay, can anybody unmute and share personal account क्या होता है quickly? पर्सनल अकाउंट से क्या समझता है जिसको भी पता है? किसी भी कोई कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल के नाम से जितने भी हम लोग खाते बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, करेक्ट all will be considered in as a personal account. correct perfect yes. So personal account is nothing but it relates to persons and entities. Okay, now this persons and entities can be either real person or real entity, or it can be artificial, or it can be representative. ओके, हम इसके बारे में एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे. सो टिपिकली क्वेश्चन टू आस्क फॉर अ नॉन प्रॉफिट, हु डील्स विद द एनपीओ? एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट के साथ कौन डील करता है, दैट विल गिव यू द आंसर कि वेदर दिस इज पर्सनल अकाउंट और नॉट. सो टिपिकली पर्सनल अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड एट ईयर एंड. पर्सनल अकाउंट, लेजर अकाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं फ्रॉम ईच ईयर, फ्रॉम एवरी ईयर टू द सब्सिक्वेंट ईयर. पर्सनल अकाउंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं. दीज आर सम ऑफ द नुआंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. ओके, एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल. व्हाट डू यू मीन बाय रियल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव? सो all the natural persons like individuals, say Mr. Rahul or Anita or individual vendors जो हमारे होते हैं, all these are natural persons, right? Individual, these are all personal accounts, personal ledger accounts. Okay, then there comes artificial persons like banks हो गए या गवर्नमेंट हो गया. नो, these are separate legal entities. These are not natural persons, but these are artificial persons under the law of the land. So law recognizes these kind of institutions like charitable trust हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या एलएलपी हो गई. These are artificial persons recognized by the law in India. Okay, then there is representative persons. जैसे लेजर अकाउंट हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी. नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू whom? ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉय. तो ये एम्प्लॉय का आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है. सो सच रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट्स. प्रीपेड रेंट टू whom? टू लैंडलॉर्ड. सो प्रीपेड रेंट लेजर इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट. अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम whom? फ्रॉम बैंक. बैंक से हमको पैसा आना बाकी है, राइट? सो बैंक, this account, this ledger accrued interest from bank is a representative person account. So all these kind of ledger accounts are considered as personal accounts. Okay, should we move on to real account? Anybody, किसी को questions है personal account पे? कोई concept जिसको पता नहीं था पहले? Does this help in understanding what is personal account? Maybe you can just type in the chat box yes, no. Okay, sure, thanks. Sure, so I'll move on to real account now. Okay, real account क्या होता है? So the accounts which relates to assets owned by a non-profit are real accounts. यहाँ पे question to ask is what does the NPO own? Is the question. इसका आंसर जो आता है that those accounts are typically real accounts. Okay. Again, even these accounts are not closed. ये accounts year on year carry forward होते रहते हैं. ये close नहीं होते at the end of the year. ये accounts का typically opening और closing balance होता है.
Examples of such real accounts are, say, cash account हो गया, cash ledger, fixed asset ledger, land and building हो गए, checks in hand, investments. These are all our assets owned by a non-profit. So these are all real accounts. Okay. तो practically अगर कुछ, if you can touch something, some object, or an object has a monetary value, typically such accounts are real accounts. Such ledger accounts are real accounts. Okay. Now, when it comes to nominal account is typically relating to expenses, losses, incomes and gains of a non-profit. Okay, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हमको पूछना है, whether such ledger account is income or expense. Okay, if it is income or expense, it's a nominal account, straightforward. ओके, नॉमिनल अकाउंट थोड़े यूनिक होते हैं क्योंकि ये अकाउंट्स एवरी ईयर क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, अनलाइक पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट जिसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं एवरी ईयर. नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते एवरी ईयर यू क्लोज सच लेजर अकाउंट्स, ओके, एंड नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर. And because they are closed every year, there is no opening or closing balances, rather no opening balances in the subsequent year for such accounts. Okay, एग्जाम्पल हो गया रेंट. रेंट आपका खर्चा है. ओके, आपने खर्चा कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, आपने उसको बुक कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंस, उधर वो क्लोज हो जाता है एट द एंड. वो आपको नेक्स्ट ईयर में नया रेंट आएगा, आपको लास्ट ईयर का रेंट लेजर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कुछ क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है. ड्यूरिंग द ईयर जो भी रेंट आपने एक्सपेंस किया या सैलरी बुक कर दी या इनकम साइड पे कोई डोनेशन रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया, ऑल दिस विल गेट रिकॉर्ड इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. और उसका जो नो एंड में जो सरप्लस और डेफिसिट बचता है, दैट सरप्लस और डेफिसिट गेट्स कैरिड फॉरवर्ड in the next year, but each expense and each income doesn't get carried forward in the subsequent year. So this is the uniqueness of nominal account. Okay, it affects the income and expenditure. Anything that affects income and expenditure is a nominal account. Is this clear? Is this concept clear for each of the three accounts? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछना. Okay, three people have answered yes. Does anybody have any questions? Perfect. Cool. So now that we have looked at the three types of accounts, let's talk about the three golden rules now. कोई बता पाएगा for each of the three accounts golden rules क्या है? What are the three golden rules? What is the golden rule for each of the account, each of the type of account? Maybe those who have not studied accounting, maybe we can help them understand this concept. कोई बता पाएगा what is the golden rule for personal account? Can somebody unmute and share whatever you guys remember? किसी को नहीं याद है? पर्सनल के लिए है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके, परफेक्ट. रियल के लिए? डेबिट वर्ड रियल, कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. परफेक्ट. एंड नॉमिनल के लिए? Debit all expenses and losses and credits all income and gains. Perfect, perfect. Yeah. So these are the three golden rules that we all need to be aware of. Now, why we have kept this in this course is that a lot of times when it comes to understanding the implications of transactions that happen in a non-profit, there is a lot of confusion in terms of क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है. जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस आते हैं उसमें काफ़ी लोग एक्सपर्ट रहते हैं. आई मीन वन इज यूज्ड टू doing certain things in a certain way of for the regular transaction, but when a new transaction comes, कोई नया transaction आ जाता है, क्योंकि conceptual clarity नहीं रहती है, it becomes difficult for for most of us to understand the implications, what to debit, what to credit, and then after you do that, what will be the implication? Where will that debit look in your balance sheet, income and expenditure? What are the implications when it comes to reporting in your
in the report, subsequent reports that you prepare based on the data that you capture in your accounting software. तो ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको समझना है पहले तो अकाउंट जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन उसमें क्या डेबिट करें और क्या क्रेडिट करें. Okay, so now that we have looked at the three golden rules, हम एक couple of examples say we'll just go through a couple of examples to understand this concept better. थोड़ा simple example है, but it will just clear the concept of the three golden rules जिनके लिए भी ये शायद first time है या नया है और जिनको ऑलरेडी पता है मे बी दिस विल बी जस्ट अ रिफ्रेशर. So suppose there is an XYZ Education Foundation, a non-profit. It receives donation from Mr. A. Mr. A is a donor in this case of rupees 10,000 in the bank account. Okay. This is one transaction. And second transaction is that a non-profit issues invoiced on Mr. X for training services. Okay. We'll talk about both of these transactions. So for each of the transaction, let's understand what are the ledger accounts that get affected, what are the types of accounts that are involved in the transaction, what is the journal entry that you will pass, and what will be the implications of those journal ledgers that you select on the balance sheet and income and expenditure. Okay, so let's take the first example. Suppose this non-profit receives donation from Mr. A rupees 10,000 into bank account. A very simple transaction, 10,000 रुपया बैंक में आया as a donation. What will, first of all, which all ledgers will get affected? Can anybody tell me which all ledgers will get affected in this transaction? Donation and bank account. Okay, okay, sure. Yeah, so you're right. Donation, income and bank account are the two ledgers, but there is one more ledger, Mr. A donor account. क्योंकि ये डोनर्स ए से आया है हमारे पास. तो विल टॉक अबाउट दिस. Okay, so let's understand each of the three accounts first. So bank account here is a personal account because it is an artificial person. Mr. A donor is again a personal account, natural person. And donation income because it is income, ये nominal account है. Okay, let's first group it under the type of account. इसके बाद इसका journal entry क्या होगा? कोई बता पाएगा? What is the journal entry? What will you debit and what will you credit? Bank account debit to donation or Perfect. Right. Yeah. So you will debit the bank because rupees 10,000 you have received. So as per the golden rule of personal account, debit the receiver of donation. We just discussed, right? So who is the receiver of donation is the bank. So you debit and you credit the income as per the nominal account rule, golden rule, credit the income. तो अपने डोनेशन इनकम क्रेडिट कर दिया इधर. ओके, बैंक अकाउंट जो है वो करंट असेट होता है. तो आपके बैलेंस शीट में आपको करंट असेट में उसको ये अमाउंट दिखेगा आपको व्हेन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट. सेम वे ये इनकम एंड डोनेशन इनकम है वो इनकम दिखेगा इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. ओके, नाउ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नोट, जो हमने डोनर ए से जो पैसा आया है वाई आर वी इग्नोरिंग डोनर ए हियर. सी इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे इस केस में कैश उसी दिन आया, राइट? जिस दिन कैश आया उसी दिन हमने बुक कर दिया. तो इफ अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैश बेसिस एंड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस, देन सच केसेस जो पर्सनल अकाउंट होता है, जो मिस्टर ए जो डोनर है, मे बी इग्नोर्ड. हम डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन. डोनर ए का लेजर यहाँ पे हम खुला ही नहीं है. Okay, that is how that is how the accounting the accounting system works. But in case you want to capture donor A का ledger in your accounting system, whatever accounting system you are using, Tally, Zoho or any software, अगर आपको एंड ऑफ द ईयर आपको देखना है कि डोनर ए से कितना पैसा आया है आपके अकाउंटिंग सिस्टम में ही, तो आपको डोनर ए का लेजर खोलना पड़ेगा. ओके, वो सेट ऑफ हो जाएगा. वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन द सब्सिक्वेंट सेट. तो सपोज यू आर ओपनिंग अ लेजर ऑफ डोनर ए इन योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, देन हाउ विल द जर्नल लुक लाइक? सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. जब भी आपको बैंक्स में पैसा आता है डोनर ए से, you will debit the bank because bank is a personal account, debit the receiver bank. And who is the giver of that money? So giver is donor A and you want to capture donor A in your accounting system somewhere, right? So you credit donor A.
बट ये एंट्री पास करने के बाद आपको इनकम भी बुक करना है, बिकॉज ये जो 10,000 रुपया आया है, with this entry, donor A will be your current, will be reported under your current liability somewhere on the creditors side. तो ये बैलेंस शीट में ही इसका एक सिंगल इसका जो ये अफेक्ट हुआ है, इसे बैलेंस शीट में हुआ है, असेट साइड पे करंट असेट बढ़ा है और लायबिलिटी साइड पे डोनर ए बढ़ गया. बट देर इज अ सब्सिक्वेंट एंट्री दैट यू विल हैव टू पास हियर कि to knock off donor A first, donor A you will debit to close the donor A ledger, and then you will transfer that amount to your donation income account. ओके, डोनर ए जो नॉक ऑफ हो गया, तो डोनर ए का लेजर क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री में आपको क्रेडिट दिखेगा, सेकेंड एंट्री में डेबिट दिखेगा. इट विल गेट नॉक्ड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर. Okay, so when you open donor a ledger, you will see, zero balance at the end. But the first entry that we just saw, bank account debit to donation income, is derived from this entry, these two entries. Okay, it may not be relevant where you don't want to capture donor a ledger in the first place. ये मेथड जरूरी नहीं है, बट अगर आपको डोनर वाइज डेटा कैप्चर करना है, so it is important that you open each of the donors ledgers, in this example donor A, and you move those entries through donor A ledger. Okay, is this clear? Is this understanding? Have you understood this concept? Can we create donor name under direct income? Yeah, so that is also okay. So you're saying in the direct income ledgers, maybe there will be sub ledgers, or maybe group के अंदर अलग अलग Yes, ledgers. I think what you're yes. trying to say. Yeah, Yeah. even that is one of the way to do this. Yeah, even that is Then one of this the dual practical. entry is not necessary. Yeah, that is one of the practical way of capturing donor data. Yeah, yeah. Thank you. Yes, Kusum. So these entries, what I see, they are on one of those softwares, right? Tally or Zoho. Yeah. Okay, fine. Yes, Yeah, yes. wanted So to check. typically, yeah. So typically, so what we are discussing today, Kusum, is that these are the accounting fundamentals and these are the journal entries. Now, when you use the software, ये सब backend पे होता है. सॉफ्टवेयर में तो आपको सिर्फ एक जर्नल खोलना है और डेटा एंट्री करना है, विच इज द वेंडर नेम, विच इज द डोनर्स नेम, विच लेजर अकाउंट गेट सिलेक्ट, यू नीड टू सिलेक्ट. But backend pay, what gets debited, or what will be the implication, how, where this bank account will look at, will show up, is under current asset, where this donor will show up in under current liabilities, where this donation income will show up in under donation income, direct income. ये सब backend पे software are taken care of. Hence, it may not be, Yeah, of course. What you you can have have. in gray is you're explaining it, like where it is and what Correct, the correct. principles No, are we in are you. through this, we are just focusing on what are the accounting principles, and for all of us to understand that what happens at the background when we use softwares. Got it. Okay. Yeah. Yeah. So just one last example here is that कि suppose ये जो NGO है वो अगर invoice raise करता है, say on 18th Feb on Mr. X. मिस्टर एक्स इज अ बेनिफिशियरी जो ट्रेनिंग सर्विसेज लेने आया है ये एनजीओ से. सो सर्विसेज आर रेंडर्ड ओके ऑन 18 फेब for 20,000 rupees, and the amount is received on 21st Feb after 3 days. Okay, so first let's understand what are the typical ledgers that will get affected. So यहाँ पे Mr. X है who is the beneficiary. Then there is training fees ledger, which is our income ledger, and there is cash. We receive cash after 3 days. These are the three ledgers. Mr. X is again a personal ledger, training fees, no nominal account, and a cash is real account. So typically, when we book the journal entry here, first we will book the income. So journal entry for booking training fee income. Can anybody just unmute and quickly share what will be the first journal entry when you book the training fee, training income? Mr. आपको X, पैसा आया नहीं है. Sir, cash account debit to fees Mr. received from X to trainees. training. Mr. X account debit to training fees. करेक्ट, करेक्ट. यस, कैश अकाउंट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैश हमको 3 दिन बाद आ रहा है. On the date of 18th Feb, we are just incurring the expense and we are rendering the services and
raising an invoice. So we will, like Alisha rightly said, we'll debit Mr. X 20,000 rupees. No, as per the golden rule, debit the receiver of training services and training fee, because training fee is the income. So credit the income. मिस्टर एक्स का लेजर जाएगा रिसीवेबल्स अंडर करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट, और ट्रेनिंग फी जाएगी डायरेक्ट इनकम अंडर बैलेंस शीट. अगेन ये क्लासिफिकेशन इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ, बट व्हेन यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, typically this is taken care of by the software that you are using. Okay, now this is when the entry gets booked. अभी जब भी आपको कैश आएगा 3 दिन बाद, तो what will be the journal? Can just somebody just quickly share what will be the journal entry when you receive cash? Cash to Mr. X. Perfect. So cash account debit, again, cash is a real account, so debit what comes in, that is the golden rule that we will apply. It will be shown in current asset, and because we are receiving this cash from Mr. X, credit the giver of cash. So Mr. X is the personal account under receivables. So these are the two journal entries that we will book in our accounting software. So in this case, because this transaction was on accrual basis, cash, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे था, तो हमने नेट बैंक अकाउंट डेबिट डोनेशन इनकम करके बुक कर दिया था. लेकिन इस एग्जांपल में आपको दो अलग एंट्रीज करने पड़ेंगे ऑन 18 Feb एंड ऑन 21 Feb सेपरेटली, बिकॉज ऑन 18 Feb it's an accrual entry that you need to pass. The income is accrued because service was rendered, but cash was received subsequently after 3 days. So this covers all the topics that we wanted to cover on the fundamentals of accounting. I hope these topics were useful and you guys have understood the concepts. कोई अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो हैप्पी टू टेक, वी कैन या कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो एक हमारा एक शॉर्ट क्विज था, रवि ने स्टार्टिंग में बताया था, विल जस्ट कीप शॉर्ट क्विजेस, वी कैन जस्ट कंप्लीट इन नेक्स्ट 5 minutes विद द 3 teams. रवि, टीम्स फॉर्म हुए हैं और डू वी हैव टू फॉर्म? Yes, we have formed the teams. This is team 1. हमने group we have just put it in chat. So all these people, please rename yourself. अपने नाम के पहले team 1 लिख दीजिए या T1 लिख दीजिए. Just write T1. This is team 2. And this is, sorry, I'm just pasting team 3 over. रश्मि, आपको आपके नाम के आगे रीनेम करना है टीम 2. Rename yourself. Shalaka, you need to rename yourself, not type in the chat box. You need to rename yourself. You need to change your name. आपको अपना नाम change करना है Zoom पे. Afzal, if you can also start renaming people, I will also do that. Yes. Make it quicker. And everybody, please switch on your videos, because this game will only be fun once the videos are on. It's going to get very competitive. We are going to see the sides of you which are otherwise never allowed to be out. So how the scores will go is, Doit, how many questions do you have? I have 9 questions, so 3 questions for each team. 3 questions per team. Okay, great. So what we'll do is that we'll have questions for each team one by one. If you are able to answer that, you will get your team will get points for it, which is 10 points. If you're not able to answer it, the question will get passed on. And the other team that answers it, they will get the points.
Yes, so this is not a buzzer round. You are allowed to discuss, but eventually you will have to give the answer. अरे ये कौन है अपने आप को पूरा 3-3 नाम रीनेम कर लिया. Somebody has renamed themselves as Team 3. Who is left? Who left? Rashmi, Team 2. It's me. 1 minute, I'm just changing. Sorry. No, you are. I It's saying Team Ayushi. I don't know who Team 3 is. Team 1 is Ayushi. That is fine. yeah, correct. Sorry. No, somebody has renamed themselves. Sujata, Shalaka, Team 3 जो भी है, please switch on your videos. Team 2, Meena. Team 3, Team 1, Kranti. Okay, I think we can begin. Though Yeah. if you can ask the question. The first question is for Team 1, I think. Yes. Yes. So this is the first question. Which accounting assumption requires income and expenses to be recorded when they are earned or incurred? A. Consistency, B. Accrual, C. Conservatism, or D. Materiality. Accrual, right? Perfect. Yes, Correct. yes, doctor. Yes, Dr. Kusum. You are You Nice. can call right. me just Kusum. But this whole, I mean, never having studied commerce, it's all a bit overwhelming, I think. Yeah, okay. So we will try to simplify as much as No, we you did a can. good job at simplifying it, but just I don't think I'll remember a lot of things going forward. Yeah, No because worries, no worries. I will not be in touch with it in terms of day-to-day work. No worries, no worries. Yes. So yeah, moving on to the second question. Treating an NPO as for this is for team two. Treating an NPO as separate from its trustees is based on which concept? Matching entity realization cost. Y'all can discuss and answer. Team two. It is entity. Perfect. Yes, that's right. Okay, team three. Bank account is classified as which type of account? Real, nominal, personal, or capital? Real account. Personal, sir. Sorry, personal. Yes. Personal. In the name of bank, Personal. it is personal. Personal, sorry. Yes. Ravi, how do we count this? Should we count as correct or wrong? No, they are allowed to discuss. So unless they say final answer is Okay, this, perfect. should not take. तो कोई So बोलो yes, final answer क्या है? Tell us what are the final answers. Final answer is ऐसा बोलो. Final answer is personal account. yes, that's right. That's right. Okay. Yeah, team one, which concept restricts recognition of unrealized gains? Accrual, matching, conservatism, or consistency? Option C, conservatism. Conservative. That's right. That's right. Zoe, the answer has to be given in a different way. The final answer is Final answer is C. Yes, that's right. So team two, only transactions measurable in money are recorded due to which concept? Periodicity, money measurement, dual aspect, or materiality? Team two, Money measurement. that's right. That's right. Good, nice. So team three, outstanding salary appears in which financial statement? Income and expenditure, receipts and payments, balance sheet, or trial balance? Balance sheet. Yes, Aisha, that's right. So all are equal so far. Last question for each of the teams. Team 1, outstanding expenses represent which of the following? Expense, income, liability, or asset? Liability, right? Liability. That's right. Yes, that's right. team Team 2, everyone prepaid will answer. rent. Sorry? Team one is going to eventually, I think, do very well. Everybody's answering in team one. Yeah, I can hear four, five Yes. voices. Yes. Team 2, prepaid rent is classified as liability, asset, income, provision.
Asset. Are you sure? You can say final answer is. Assets, assets. Yes, yes, yes. That's right. That's right. That's right. Last question for team three. Income received in advance is shown as what? Income, liability, asset, or reserve? Team three. Liability. Liabilities. Yes, yes, that's right. Three voices. Yes, that's right. एक टीम वन का भी था, सचिन ने भी आंसर कर दिया सामने शायद. Yes, that brings up an end for this first session. Yes. Thank you, Rohit. I think I want to very quickly take a screenshot of everybody, if everybody is okay. So please smile on the count of three. Everybody whose video is off, अरे 2 मिनट तो वीडियो ऑन करो, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेने दो. क्रांति, रामाकृष्णन, मीना, शलाका, शलाका वीडियो ऑन करो. Okay, चलो screenshot time. 1, 2, 3, smile everybody. Great, I have it. Thank you so much. We will be sharing the recording and the assessment. This was not the assessment, this was a quiz. The assessment is separate. Please note that it is very important to complete the assessment to get the certificate at the end. So please ensure you complete all the assessments. We will be sharing all the links in the Discord group. So if you've still not joined Discord, please join Discord. Everything will be circulated there. I will be dismantling the group at the end of this session. So please do that. Fareen, yes, I will share the link. Can you please share the link of the group you were talking about in the beginning? That's Discord, Fareen. I will send you the link again. If somebody is not able to get the Discord or not able to understand it, please get in touch. We will help you install it. But it's a crucial part of what we are doing. And yeah, very excited to have everybody here. If anybody wants to stay back and give feedback to how we can, make the next session better, what did you like, etc. It will help us, understand how should the pace be, should there be more examples, anything that you want to give feedback to, we will try and see how we can make it better. So if anybody wants to do that, please help us. Yes, Ajay. Yeah. I think 2 hours का duration थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. Like if we can reduce like 1.5 hours or something like that, if Okay, possible. thanks, Arvind. Sure, we will think about it. I think हमने शुरू किया था 1.5 घंटे से, फिर हमें पता चला, हमें समझ में आया कि 2 hours is actually required because otherwise बहुत cramped up हो रहा था. ये एक दो सेशन है जो थोड़े theoretical heavy है. आगे you will realize that it will ease up. But I hear you. We will see what we can do to ease out a little bit of the pressure. But thanks for saying it. I think there should be a break of 5 or 10 minutes because it's a 2-hour session. I think after 1 hour, maybe it would be great if you can get it 5 will minute help break. us to to go to the next topic, and we'll also little bit relax as to jump on And the for a other while, topics. we can stand and stand and just move our body a bit. Yeah, so it's like it's just going on, just a 5 or 10 minutes break if everybody is Maybe okay with that. I'm okay with 5. Okay, 5 is also fine with me. No, we'll do it. We'll do that certainly from session 2 onwards. Yes. Yeah, makes sense. Like I think we need to do that. We will certainly do that. I think we are just trying to figure out how do we fit everything in, but certainly we can definitely do that. I think it was a great session. Thank you, Doshit. It was really nice. Brushing up the basics, which was much needed.
and I think the pace was good. And appreciate your patience in answering all these questions. If these questions were not there, then maybe that half an hour could have been it would have been sufficient. But since you were answering these questions during the session, it was great, and that's why I think that session got elongated to 2 hours. But really appreciate your patience and a very good session. Thank you so much. Thank you. Thanks for the feedback. Appreciate. Thank you. एंड मुझे लगता है कि ऐसी भी सो मैं तो ऑब्वियसली आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो मेरे को ये लग रहा था कि बहुत सारी चीजें जो स्कूल में चीजें कर रही थी 11th 12th में, तो वो कुछ कुछ चीजें मेरे को याद आ रही थी। फिर मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं कि मैं भी अभी, क्योंकि आफ्टर सो मच ऐसी बहुत सारी चीजें करने के बाद आपको ये बेसिक वाली चीजें शायद थोड़ी हिल जाती हैं, पर आप चीजें करने लग जाते हो प्रैक्टिकली जो रहती हैं। सो मैं वही याद कर रहा था कि क्या क्या चीजें थी। एंड इट वाज अ गुड सेशन, एंड आई थिंक जब रवि से भी मेरी बात हो रही थी, सो पूछ रहा था कि यार क्या कैसी चीजें रहेंगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेशन दोहित। और बहुत सारे बेसिक चीजें दोबारा से मेरे को याद है कि हाँ यार, कि शायद अब चीजें शायद मे बी टेक्नोलॉजी की थोड़ी चेंज होगी, बट या वो चीजें बैक एंड पे तो हमें पता होनी चाहिए। सो मे बी आई थिंक अब तो मैं भूल भी गया था, शायद दोबारा से मेरे को याद आ रही थी कि हाँ यार ऐसी चीजें करी थी। थैंक यू सो मच रवि एंड दोहित एंड होल टीम ऑफ आर्या। 113,064. हेलो। Yes, yes, sir. बहुत देर के बाद, बहुत सालों के बाद एनजीओ का अकाउंटिंग तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। सो बेसिक जो अपना रूल्स वगैरह था वो याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पता रहता है, लेकिन वैसे ही इन्होंने जो बोला कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इज डिफरेंट, वो कर रहे थे, लेकिन अभी कैसे किसी ने पूछा तो झट से याद नहीं आता है कि अरे वो बेसिक रूल पढ़ा तो था, लेकिन एक्चुअली क्या रहता है। अभी आपने वो जो 3 गोल्डन रूल्स पूछे तो फिर अरे हाँ यही तो थे। ऐसे होता है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन सेशन तो बहुत अच्छा है। कुछ बहुत सारी एनजीओ अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो फिर पता चलता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए। हम लोग करेंगे तो फिर यस, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Rashmi ji. Appreciate. Thank you. Okay, I think that's it for today. We will see you next week, and until then, if you have any questions, please type them on Discord. We will respond. Thank you. See you all. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye.